बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। रावलपिंडी, निखरा हुआ मौसम, खुशगवार लम्हात और उससे बढ़कर क्रिकेट ऑन। पहला दिन आज इस बलूचिस्तान वर्सेस सिंध क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन 2022-23 का 13वां मैच है। If you look right in front of me, there's a couple of bare patches rather, and the moisture is not that much despite a little bit of rain. It's pretty dry, but the bare patches, keep that in mind. If you go further down, there's even covering of grass. If you have a look, there's green grass, even covering of grass, but we've seen that grass only lasts for a session or a session and a half. On this pitch, if batting first may be a slight disadvantage, batting last on day 4 can also be a slight disadvantage. Will the coaches look that far? We'll have to wait for the toss. And the news is that Sindh, being the wayside, have decided to ball first. To ball first. That's an easy decision for South, and we'll have a word with South. बलूचिस्तान पहले करेगा बैट। इमरान भट्ट अच्छे बैटर है ओपन पे। अजीम गुमन इस वक्त शामिल हो चुके हैं। अब्दुल वाहिद, बंगलजई, असद शफीक, हारिस सुहेल और उनके बाद हुसैन तलत, हसीबुल्ला, काशिफ भट्टी, खुरम शहजाद, नजीबुल्ला और आकिफ जावेद की एंट्री हुई है। दूसरी जानिब सिंध की टीम में 3 तब्दीलियां हैं। सैयद फराज अली, सरफराज अहमद और गुलाम मुदस्सिर शामिल हुए हैं। इस वक्त हम तैयार हैं आज के दिन का पहला बॉल होने के लिए। साजिद आफरीदी बहुत सीनियर अंपायर, प्ले की कॉल है उनकी तरफ से। पहला बॉल ऑफ स्टंप पे और थोड़ा सा बाहर निकला। यासिर हमीद मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कॉम बॉक्स में। आपको वेलकम करते हैं एंड गुड मॉर्निंग। Azim Kumban and Abdul Wahid Bangalzi falling cheaply. Edged! Oh, he's dropped it. He has dropped it. Saad Khan had to dive towards his left. इस दफा प्रॉपरली इसको मिडिल कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की जानिब, शानदार बाउंड्री। इस दफा इमरान भट्ट थे और एक ओवर पिच डिलीवरी इसका भरपूर फायदा उठाया। फ्लाइटेड डिलीवरी, इसको कवर्स में खेल दिया है। एक्स्ट्रा कवर्स में रन्स मिलेंगे और बॉल तेजी से बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रन्स। डाउन द ट्रैक, इस दफा चार्ज लेने गए लेकिन आउट हो गए। स्ट्रेट टू द फील्डर और असद शफीक यहां टेम्पर लूज कर गए। इस शॉट की तवक्को नहीं थी असद शफीक से। हो चुका था और बॉल के पिच तक नहीं पहुंचे। सीधा मारना चाहते थे लेकिन बल्ला घूम गया हाथ में। अभी 1 ओवर पहले इन्होंने बैट चेंज किया। असद शफीक 27 रन बना सके, 51 गेंदों का सामना किया और ये विकेट हासिल हो गई 54 पर 3। To the fielder. Got the edge. Did he get the edge? Umpire Imran Javed says no. Probably it was the googly and it flicked the back thigh pad, I think. That's gorgeous. Rode on top of the bounce. The timing was sublime from Imran Butt. This is magnificent. Timing and placement, top class. That is a sad affair. Down the ground, forceful blow. Good use of the feet as well. Harris looks in the mood. Nicely played. Just waited for it. Use the pace. Imran Butt looking good. Yet another boundary for him. काफी बाहर ये बॉल था, इसको ड्राइव किया खूबसूरत अंदाज में, 4 रन्स। लेग साइड पे ऊंचा खेले, बहुत अमेजिंग कैच हो सकता था लेकिन ड्रॉप हो गए। इस तरह का फ्लैशी वॉकिंग स्ट्रोक, अच्छा शॉट, बॉल के ऊपर पहुंचे। टाइमिंग कितनी बेहतर है, बेहतरीन, 4 रन्स। 3 रन की दूरी पे इससे पहले 53 रन ऑलरेडी जोड़ चुके हैं सेंट्रल पंजाब के खिलाफ। इमरान भट्ट जो कॉन्फिडेंस है उनका वो बहुत बेहतर है। ये शॉट रुकना चाहिए था
लेकिन 4 रन मिले और इसके साथ 50 रन भी मुकम्मल हुए। दूसरी 50 इस सीजन की क्वाइड-ए-आज़म ट्रॉफी में। वेल प्लेड इमरान भट्ट। जी हाँ, वेल प्लेड इमरान भट्ट। एक और अच्छा शॉट लेट कट किया इस बार और ये बॉल भी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा। 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्रीज और इमरान भट्ट नहीं मारते, लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल और बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से होता हुआ बॉल 6 रन के लिए। से बॉल हवा में गई, बैलेंस आउट हुआ। इस बार टांग से बाहर बॉल, 4 रन हासिल करेंगे। इजी पिकिंग्स हारिस सोहेल के लिए। And again, trying, he's bowled him. I think he's bowled him round the legs. Yeah, the disappointment says on Imran Butt's face. He was attempting this shot way too many times. And this time round his legs, he's bowled himself. Imran Butt, have a look at that. Again, trying that shot. Just threw his glove and the ball rolling onto the stumps. That is an unfortunate way to get out. Imran Butt goes on 60. Disappointment. He was pretty much set there, playing nicely. Played red ball cricket for Sri Lanka. That's a full toss, nicely clipped. That is a beautiful shot. That is Haris Sohail's special, a boundary towards onside. And he gets this huge turn when he bowls that googly. Oh, that kept low a little. It's not a good idea to go on the back foot against. I'm going to ask you about the history about this. That's the first time. Full toss into the gap. That's an edge. We'll earn him a boundary. Santhal is off to the mark. Uh-oh. Watch out, Haris Sohail. It was almost right there. Halfway there. Well, they're useful in every format. That's a big one. Up and over. No one there to stop that. It didn't even middle it, but still would rush away towards the boundary. That is the class of the man. Flighted delivery, pitched in his zone. Oh, that's pitched outside, maybe. Yep, it's pitched outside. It looked certain that it did pitch outside, or it would have just hit that off stump. There's no chance for the LBW. In the air, oh, just touching the hands of Saud Shakil. Haris Sohail right at the edge of lunge. What are you doing? Poor batting. He's looking for runs on every occasion. That's it. 42 overs gone, 130 for 4 Balochistan as umpire dislodged the bails. That means it's time for lunch. 130 runs being scored. Run rate is also very impressive, 3.10, but those 4 wickets are definitely going to hurt Balochistan. अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आप सबको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, जहां पर खाने के वक्फे के बाद का खेल शुरू होने को है। आज फ्राइडे है, जिसकी वजह से एक्सटेंडेड सेशन हुआ बलूचिस्तान वर्सेस सिंध, और अब तक ये पोजीशन है बलूचिस्तान की। 130 पे 4 आउट हैं। हाईलाइट इस वक्त इमरान भट्ट जो कि 60 पे आउट हुए। उसके बाद अब शराकतदारी है हारिस सोहेल और हुसैन तलत के दरमियान, और 2-2 विकेट शेयर किए गुलाम मुदस्सिर और अबरार अहमद ने। स्पिन और पेस 50-50 काम किया। 130 पे 4 है इस वक्त बलूचिस्तान, और मजीद अभी आधे दिन का खेल बाकी है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है इस वक्त शाह फैसल, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज। पहला सेशन यकीनन सिंध के बॉलर्स के नाम रहा, लेकिन पिंडी स्टेडियम की ये खासियत है कि यहाँ पर रन्स बनेंगे। यहाँ रन्स की रफ्तार कम नहीं हो सकती क्योंकि विकेट की जो नेचर है, इसलिए बलूचिस्तान भी अगर एक पार्टनरशिप यहाँ लगाने में कामयाब हो गई तो मैच में वापसी हो सकती है। ऑफ स्टंप से बाहर
खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन पीछे लेकिन लॉन्ग ऑफ आगे है और एक टप्पा लगने के बाद गेंद बाउंड लाइन के बाहर। अच्छा अटैकिंग इंटेंट है हारिस का पिछले मैच में, तो जाहिर है उन्होंने अपनी जगह रिटेन की। फ्लैशी गए, गैप निकाला, डीप बैकफुट पॉइंट, यकीनी 4 रन्स मिलेंगे। इंतजार में थे इस तर्ज के बॉल के, काफी देर से कुछ चौका नहीं आया था। या इंटेलिजेंट बॉलिंग, इस दफा चार्ज किया, जगह बनाई और एक बाउंस के बाद बॉल फेंस पार कर गई लॉन्ग ऑफ की जानिब। 4 रन्स। इसके साथ ही नित सेंचुरी भी मुकम्मल हुई। हारिस सोहेल की कोशिश कर रहे थे ओवर के आगाज से ही ये स्ट्रोक खेलने की, इस मरतबा उन्हें मौका मिला के सर के ऊपर से, इस मरतबा मिड ऑन के सर के ऊपर से, वाइड ऑफ मिड विकेट नहीं। ये ही हारिस सोहेल हैं, इनकी बैटिंग की सलाहियत जितनी भी है, लेकिन जब इस तरह का ब्रेन फेड होता है तो एक अच्छे आगाज से हाथ धो बैठते हैं। ज्यादा वाइड खेलना चाहते थे क्योंकि यहाँ फील्डर मौजूद था, देखा आपने बल्ले के बॉटम को चेक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इस दफा भी चार्ज करने गए लेकिन बॉटम पे बल्ला जो है वो बॉल लगा और जरूरत नहीं थी यहाँ पर इस तर्ज के स्ट्रोक की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक शॉट हासिल कर चुके हैं। 88 बॉलों में 50 रन हारिस सोहेल के, और बलूचिस्तान ने अपना 5वां खिलाड़ी खोया। असगर का अच्छा कैच डीप में 148 पे 5। I'm sure that the confidence is... Oh, good delivery. That kept low. It's one way of doing it. Just sweep it. There is fielder, but sloppy work will earn Senthalat another boundary. So yes, it's Gwadar Sharks taking on Bahawalpur Royals for the all-important final tonight at 6 p.m. Oh, it was in the air, but in the gap. Asil Abdullah will get another boundary. A lucky one. These young cricketers, I tell you, down the track, over the head. Has it got enough? Enough to get to that boundary. 4 runs for Senthalat. Counter-attacking Abrar. Is there a neck? Is there a neck? He thought, but he didn't get much help behind the stumps from Sarfraz Ahmed. You might will be welcomed by some tigers, yes, and they will ask you. They will definitely. There are some. In the meantime, there's a very good shot. वो अच्छा शॉट, पीछे होके जगह बनाई, थोड़ी सी पीछे थी, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, पीछे गिर गई। हाथ ऊपर उठाते हुए एक बार फिर इस दफा गैप में निकला बॉल। 4 रन्स। इस दफा बेहतर और अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन आसिफ जो है वो सेटअप करने की कोशिश में है। सऊद शकील उस शॉट का वेट कर रहे हैं और ये वो शॉट है और सीधा, और ये थोड़ा सा दूर। इससे पहले वो ओवर भी करवा चुके थे। इस दफा स्वीप किया, हवा में बॉल, लेकिन टाइमिंग अच्छा है। 4 रन्स। Nicely played. With an offer. He just creamed it through the covers before. Hasibullah is very strong in that direction. False sense of insecurity against the part-timer, and the edge flew through the gap. That's exactly what they were hoping. Initially they had 2 slips for Faraz. शानदार ड्राइव किया, सारे फील्डर्स देखते रह जाएंगे। ये बॉल जल्दी से चला जाएगा बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन्स के लिए मिडल स्टंप की और स्टंप्स की एज, बॉल चला जाएगा 4 रन्स के लिए। लकी बाउंड्री हसीबुल्लाह के लिए। ये पहुंच गए 44 रन्स पर।
एक बार फिर बॉल जाएगा थर्ड एरिया में. एक रन तो लिया है, दूसरे रन के लिए भी हुसैन तलत वापस आ जाएंगे और अपने शानदार 50 रन मुकम्मल किए. एक बहुत ही फाइटिंग इनिंग, एक बहुत ही कमिटेड इनिंग खेली है हुसैन तलत ने. जितनी भी तारीफ की जाए कम है. एक ऐसे मौके पे बैटिंग करने आए जब थोड़ा प्रॉब्लम में थी बलोचिस्तान. टीम को निकाला, अपने रन्स किए. एक शानदार कंप्लीट इनिंग. 16 overs for just 21 runs. He hasn't got the wickets today. At the edge, and it flew through the gap. Will run away. A lucky boundary will bring Hasibullah's 50. This has been a courageous knock from the youngster. He dug in deep when his team was under pressure. Really resolute and very, very fighting innings from the youngster. Well played. Excellent. This has been really a good batting. Swing but misdirected, and Hasibullah will collect a boundary. Easy pickings for the Balochistan left-hander late in the day. Guided away to third, just a single to get Sam Talat back on strike. I don't think he was looking forward to that. He's having a little chat, and now the two umpires are coming together. The official time on the clock is 5:02, 2 minutes past the scheduled close. And I think they've given the marching orders to the batters. I haven't seen them take the reading yet, which will set a precedent for the rest of the 3 days. Probably they will do it now after they've sent the players away. Bails are off, and that's the signal that it is time on day one. Well, overall, good fight in these two, making the partnership of 110 runs in 213 deliveries. Well played. They kept their tail up, and really a well-played knock. But a solid looking card at the end of the day for Balochistan. Imran Butt's 50 was hard work. He had a little bit of luck, but he made it count. Azim Gumman and Bangalzai bagged failures. Asad Shafiq was looking very good until just indiscriminate stroke from the skipper. So was Haris Sohail, who looked elegant and delectable for his 50. 55 not out for Santalat, 58 for Hasibullah, a partnership of 110 runs, unbeaten for 6 wicket. Hard work for the Sindh bowlers. Umar, no rewards, but he kept at it all day long. Ghulam Mudassir took 2 early wickets, set the ball rolling for Sindh, and then Abrar's marathon spell meant that Sindh was always in the game. 3 wickets for the mystery spinner.